जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। एसबाई वर्सेस वाइट 1703 का केस है। पुराने केसेस में तुम्हें बहुत मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि टॉट हमको पता है कि इंग्लैंड का ओरिजिन है, ठीक है, और इंडिया में हमने उसको बाद में लाए हैं, और इंडिया में हम उसको एप्लीकेबल तो बना रहे हैं थ्रू वेरियस लेजिस्लेशंस, ठीक है। लिखिए, द plaintiff in this case was a qualified voter at the parliamentary election. The plaintiff in this case was a qualified voter at the parliamentary election. The plaintiff in this case was a qualified voter at the parliamentary election, and the defendant was a returning officer. And the defendant was a returning officer in this particular case. And the defendant was the returning officer in this particular case. And the defendant was the returning officer in this particular case. Defendant wrongfully refused to take the vote of the plaintiff. Defendant wrongfully refused to take the vote of the plaintiff defendant wrongfully refused to take the vote of the plaintiff ठीक है। Later on it was found that the candidate later on it was found that the candidate to whom plaintiff wants to vote later on it is found that the candidate to whom the plaintiff wants to vote later on it is found that the candidate to whom the plaintiff wants to vote won the election though the plaintiff was not able to vote. So in this case, though there was no actual loss or harm caused, to the plaintiff, by the act of the defendant, loss or harm caused to the plaintiff by the act of the defendant, but since there was a violation of legal right of the plaintiff, by the mistaken act of the returning officer, the legal right of the plaintiff got violated. The legal right of the plaintiff got violated. The legal right of the plaintiff got violated. The legal right of the plaintiff got violated.
and plaintiff succeeded in his action even though no damage is caused. Plaintiff succeeded in his action even though no damage is caused. नीचे लिखो ब्रैकेट में इंजूरियस साइन डैमनम। ये केस किस पे है? इंजूरियस साइन डैमनम पे है। इंजरी तो हुई, मतलब लीगल राइट तो वायलेट हुआ, लेकिन डैमेजेस नहीं हुए हैं, आपको नुकसान नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, हार्म नहीं कॉज हुआ। लेकिन क्योंकि आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है, यू हैव अ राइट टू फाइल अ सूट। ठीक है, यू हैव अ राइट टू कंटेस्ट द सूट, यू हैव अ राइट टू गो इन अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट बिकॉज ऑफ द वायलेशन ऑफ लीगल राइट। ये वाला पॉइंट समझ में आया इस केस का? ब्रैकेट में लिख लेना इंजूरियस साइन डैमनम। Subscribe for more content.